Okay, students, myself, Ashok Kumar, FTV Physics. So, in the last lecture, we have studied about the bandwidth, about the signal bandwidth, about the transmission bandwidth. So, now let us come to our main topic, that is modulation. Before going that, we should understand the meaning of the actual modulation. Let us pause. I will give modulation means मॉड्यूलेशन का मतलब होता है द चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ ए सिग्नल और से ऑफ कैरियर सिग्नल by using the message signal. Let us pause. यहां पे हमें क्या कह रहा है? यहां पे मैंने आपके सामने दो टर्म यूज किया. फर्स्ट वन इज चेंज इन प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज कैरियर सिग्नल. अब प्रॉपर्टी में आपके क्या क्या आ सकते हैं? इन द प्रॉपर्टी यू विल गेट लाइक इट्स एम्पलीट्यूड. सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज दैट इज फेज. यानी हमारा कोई एक कैरियर सिग्नल होगा, उस कैरियर सिग्नल की इन तीनों प्रॉपर्टीज में से हम किसी एक प्रॉपर्टी को वेरी करवाएंगे बाय यूजिंग आवर मैसेज सिग्नल. ओके, अब मैसेज सिग्नल होता क्या? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी वांट टू ट्रांसमिट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, दैट इज नॉन मैसेज सिग्नल. लेट अस डू. मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा सिग्नल है. अगर ये मेरे को किसी एक डिस्टेंस पे, अज्यूम करो मैं कोटा से बोल रहा हूं और मेरे को दिल्ली में मेरा जो स्पीच है वो वहां पे डिलीवर करना है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा मैसेज सिग्नल है. उसको मैं किसी कैरियर सिग्नल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को वेरी करवा के उस सिग्नल को अगर मैं ट्रांसमिट करता हूं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अज्यूम हम एक फिजिकली एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है. व्हाई वी नीड द टर्म मॉड्यूलेशन. लेट अस सपोज ये आप हो, ओके, आपको अपने घर जाना है. लेट अस सपोज आपका घर यहां कहीं है. ओके, ये आपका घर है. अब आपके पास यू हैव टू वेज to go to your home. Firstly, let us, आप वॉक करना स्टार्ट करते हो और आप अपने घर पे पहुंच जाते हो. You have reached your home and assume this distance between you and your home is around 20 kilometer. आप यहाँ पे जो फ्रेशनेस होगी, that freshness is so much that you are feeling like I am very fresh and I have so much power. But whenever you start to walk from here to here, then reach to home. Whenever you reach here, that much power, that much freshness has been removed. You have not that much freshness as you have here. Okay, now what will happen? Whenever you reach here, you have not that much power that you can feel like here. मतलब आप यहाँ पे उतना फ्रेश नहीं फील करोगे जितना यहाँ पे फील कर रहे हो. मीन्स आपका जो पावर था दैट हैज बीन रिड्यूस्ड व्हेन यू कम टू योर होम. जैसे आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो आप में इतनी फ्रेशनेस नहीं होती है. यानी कि मेरे पास एक मेथड था कि आपको मैं पैदल पैदल
यहां से पहुंचा दे। ओके, दिस इज केस 1। नाउ आई एम टेकिंग केस 2. Now what will happen in the case 2? Now you are standing here. Okay, now and your home is here, around this distance between you and your 20 kilometer. Now I have a opportunity कि मैं आपको किसी बस या फिर किसी गाड़ी में बैठा के आपको आपके घर पहुंचा दूं। आपने यहां से एक कार लिया। ओके, आप इसके अंदर में बैठ गए हो और ये कार अब यहां से यहां से यहां से और यहां पे आपके घर पहुंच जाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? दैट मच फ्रेशनेस you are feeling here, the same freshness or a little bit less you will feel here. मीन्स आपने जितना यहाँ पे फ्रेश थे, मीन्स आप यहाँ पे जितना फ्रेश थे उतना ही स्ट्रेंथ और पावरफुल यहाँ पे फील करोगे, बस थोड़ा बहुत आपका डिक्रीमेंट हो सकता है। बट इन दिस केस द थिंग इज टोटली डिफरेंट। whenever you reach from here that much freshness you have not have, but here you have that much freshness. So what I have done here, I have provided one carrier to you. That is carrier means I have provided a bus to you. That bus act as a carrier for you, and this person means you are working here as a message signal. मीन्स मेरे को आपको एक मैसेज सिग्नल हो, अगर हम इसको कम्युनिकेशन की भाषा में देखें तो आई हैव टू यूज यू एज ए मैसेज सिग्नल एंड दिस बस एज ए कैरियर सिग्नल. ओके, सो वी नीड द मॉड्यूलेशन दैट so that we can transfer the message of same strength from here to the here. मीन्स सेम स्ट्रेंथ को अगर हम यहां से यहां तक ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन. बिना किसी डिस्टोर्शन के मैं अगर मेरे सिग्नल को यहां पहुंचा पा रहा हूं, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन. और मॉड्यूलेशन में हमेशा मेरे को दो चीजों की जरूरत होती है. वी नीड टू टाइप ऑफ द सिग्नल्स. फर्स्ट वन इज मैसेज सिग्नल and second one is what? Carrier signal. So both message signal, carrier signal are responsible for our modulation. Now in the technical language, if we start to study why we need modulation, okay, then modulation states that what the next topic is? The next topic we have the need of modulation. Okay, in the modulation the first step come here like this. The first step, first point that responsible for our modulation is height of antenna. What is height of antenna? Means whenever I want to transmit the signal from one point to the another point, then we always need an antenna. आप अपने मोबाइल्स में भी अगर यूज करते हो तो वहां पे भी आपको अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी होती है और रिसीव करनी होती है, इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी एंटीना. ओके, and the height of antenna is represented by, that is taken as lambda by 4. What is this? The lambda is the wavelength of the signal and 4 is the constant. Means अगर मैं एंटीना की हाइट को निकालता हूं, we have the formula that is this one, lambda by 4.
मीन्स जो भी आपका सिग्नल है उसकी वेवलेंथ को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हो देन वी विल गेट द हाइट ऑफ द एंटीना. Then how its effect, why we need this? Let us take example. Suppose I have a message signal. Okay, message signal है मेरे पास and I represent the frequency of the message signal by the symbol FM. Okay, now let us suppose कि जो मैंने FM लिया है ये मैंने 50 हर्ट्ज ले लिया. मैंने जो मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 50 हर्ट्ज ले ली. देन और मैं इसको एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहता हूं. देन व्हाट विल बी द हाइट विच रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दिस सिग्नल? दैट इज h lambda by 4 and lambda can be represented as c by f. What is c? C is the speed of signal, speed of light, and f is the frequency of the signal. Now I can represent height here h, that is c by 4f. If I put the value, that is, we know the value of the c is 3 into 10 the power 8 divided by 4 into what is the frequency of the signal? 50 hertz. I have written here this one. Okay, then what will be the height of the antenna here? That is 1.5, 5 into 2, 5 into 4, 200. Okay, into 10 power 6 मीटर. ओके, मीन्स अगर मेरे को ये सिग्नल ट्रांसमिट करना है डायरेक्टली बाय यूजिंग द एंटीना दैट मच फ्रीक्वेंसी, देन आई नीड द हाइट ऑफ द एंटीना 1.5 into 10 the power 6 मीटर. मीन्स मेरे को कितना चाहिएगा किलोमीटर में? अगर मैं इसको निकालूं देन इट इज गिवन एज 15, यानी कि मेरे को 1500 किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिएगा. मीन्स दैट मच हाइट आई रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल. क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट practically available. Theoretically it is possible, but whenever we try to design this, then we are unable to get that much. Okay, then why we need this? Then the second step come here. Let us suppose in the case second, if I take the frequency of the signal, that is 50 megahertz. I am represent for mega, and in the mega we have 10 the power 3. Got it? Okay, now let us calculate the height of the antenna here. H, that is given as c by 4f. Put the values here. What will you get? C is 3 into 10 the power 8 divided by 4 into 50 into what? 10 the power 3, because we have represented 50 megahertz. No? Now what will you get? We will get 3 into 10 the power 8, 2 into 10 the power 5, because 5 in 15 to 4, 200. We have taken 2 zeros to this point. Now what will be the value come here?
the value when we calculate, we will get it as how much? What? 1.5 into 10 to the power 3 meter. Okay. Now what will be the height I will get? I will get 15, 1.5 kilometer. I can represent here. The height of the antenna I required that much is 1.5 kilometer. Okay. Means now I can use the term, which antenna I can use? Either 1500 kilometer or 1.5 kilometer, which is practically possible. Practically possible antenna is 1.5 किलोमीटर एंटीना. ओके, तो हमने मॉड्यूलेशन का जरूरत क्या पड़ा? मॉड्यूलेशन मतलब हमने हमारे सिग्नल को किसी हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में भेजा है. अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही रखते हैं, मतलब जो हमारा सिग्नल होता है वो हमारा हर्ट्ज टू किलो हर्ट्ज की रेंज में होता है, उसको अगर हम डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं, देन वी रिक्वायर्ड द एंटीना ऑफ द हाइट अराउंड 1500 किलोमीटर. ओके, बट whenever we superimpose our signal to the higher frequency and make the frequency of our signal around 50 megahertz, then we need the height of the antenna only around 1.5 kilometer. That is practically possible. ये मेरा पॉसिबल नहीं होगा. अगर मैं इसको एंटीना बना के भेजना चाहूँ, then I am not able to transmit this signal, and I am not able to transmit this signal. ओके, अज्यूम कीजिए कि अब मेरे को एक केबल के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स को भेजना है. ओके, द सेकंड पॉइंट कम हियर इज मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग में आप क्या करते हैं? इन द मल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल ऑफ द वेरियस फ्रीक्वेंसीज आर मल्टीप्लेक्स्ड और सेंड टुगेदर वाया द सेम चैनल. देन व्हाई वी नीड द मॉड्यूलेशन हियर? हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी यहां पर? इन द मॉड्यूलेशन और से इन द मल्टीप्लेक्सिंग, सपोज वी हैव दिस वन सिग्नल, and there is also one another signal. That signal is represented like this. Okay, this is 0, this is a 0 frequency, this is the frequency spectrum. I have already told you in the previous section. This is the frequency spectrum. So what will happen now? If I want to send both of these signal through this coaxial cable or same channel, then both the signals will overlap each other because they both have the same frequency, that is FM. This is also FM. Now the modulating or say multiplexing signal, the signal we received will be in the form of like this. This is our signal first, and this is our signal second. Now both the signals having the frequency minus FM and this one is plus FM overlap to each other, and the resultant signal we will get will have the form like this. The signal at each and every points will add up to each other, and the final resultant signal will be that is this one. And here it is the loss of our information, because we want to transmit this information, but we have transmit this much information. In this case I want to transmit this information, but I have transmit this information. So this is not the correct transferring of our information.
Then how can we remove it? We can remove this type of distortion or this type of overlapping by using our modulation. In the modulation, what we have done? Basically in the modulation, we are making our signal, modulating our signal to the higher frequencies. Okay, now let us pause. If I take on again that signal, represent, if I represent my first signal like this, this, that start from 0 FM minus FM. Now I am superimposing or I am modulating my signal, I am translating my signal, or say modulating, translating, both are same term, to the higher frequencies. How? We'll study it later. Let us take. If my signal has been put like this, after modulating this signal, this 0 frequency has been shifted to the FC. This FC represent here what? FC represent the frequency of the carrier signal. जो हमने वहां पे गाड़ी के रूप में यूज किया था ना, वो कैरियर के रूप में काम कर रहा था. उसी तरह हमारा FC होगा, वो हमारे सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होगा जो उसको लेके जाएगा. That is FC. Okay. Now the another frequency component, let us suppose this is FC1. Now this frequency component has been translated to the higher frequency level, FC, this one, to some plus to this frequency, that is FM. Okay, and the lower end, that is minus of FM, has been translated to this point. That point is known as FC minus FM. अगर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं और FC में से ये हिस्सा 0 है, अगर 0 हमारा FC1 पे चला गया है तो ये कहाँ जाएगा? FC में से FM माइनस कर देंगे ना, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा. ओके, दिस इज द थिंग फॉर द अवर फर्स्ट सिग्नल. नाउ इन द सेकंड सिग्नल we have written our signal like this. Okay, by using white signal. Okay, the signal frequency here is FM, and this 0 and this is minus FM. This is my signal. I have written my message signal which I want to transfer. Now I translate this signal to the new frequencies by using some carrier. I am superimposing this signal on a higher frequency signal. Now the new spectrum for my signal will be get like this. If I take my signal to a new frequency, then what will happen? Let us suppose this F, the new frequency for my component is, carrier frequency is FC2. Okay, after superimposing, the spectrum will be like this. The lower frequency has been shifted to FC minus FM, but here I am using the carrier frequency as FC2. I am giving some name to this, FC2. Okay, now the upper frequency component here will be represented as FC plus FM. Is it right? No, because I am using the carrier frequency here FC2, so I should mention here FC2. Okay, now I am sending the signal this much represented as 3, and this signal is represented as 4. If I want to transmit the signal 3 and 4 using the same coaxial cable, then what will happen? The spectrum of the resultant signal will be given like this. This
The signal will be like this. If I assume Fc1 is less than Fc2, then my spectrum will become as like this. If I use this as Fc1, this one as Fc1 plus Fm, this one as Fc1 minus Fm. Okay, and this is the carrier frequency. This is our signal number 3. Okay, now let us take our signal number 4, which has we get after the translating or after the shifting towards the higher frequencies, that is on the Fc2. On the Fc2, now we have assumed Fc1 is less than Fc2, then Fc2 assume like present here, then the spectrum will be like this. This is Fc2 minus Fm. This is what? This is Fc2 plus Fm. Is there any chance of the overlapping of these two signals like this? Is there any chance? Does we get the resultant signal like this? No. We are getting the signal like this. Both are totally distinct or separated from each other, and there is no destruction, no distortion, no noise calculations on these signals. So these are the two basic ideas which make us responsible to get the modulation techniques. Got it? मीन्स हम कहें कि इस सिग्नल में जो यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ये सिग्नल इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है, बट इस केस में मेरे दोनों सिग्नल जब ओवरलैप हो जाते हैं तो मेरा रिजल्टेंट सिग्नल इस तरह बनता है और मेरी एक्चुअल इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। अब मेरे एक्चुअल इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो तो मैं अपने लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, क्योंकि जो मेरे मैसेज सिग्नल होते हैं उनका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों सिग्नल अगर बिना मॉड्यूलेशन के भेजेंगे तो ये सेम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स इधर पहुंचेंगे, लेकिन मैं अब इसको हायर फ्रिक्वेंसीज पे ट्रांसलेट करवा देता हूं बाय द टर्म्स मॉड्यूलेशन। उसी तरह मेरा दूसरा सिग्नल होगा, उसको भी मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट करवा देता हूं। इसी तरह मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग से बचाने के लिए उनको हायर फ्रिक्वेंसीज पे ट्रांसलेट करवा देता हूं। मीन्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट था, बट द नाउ द सिग्नल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द Fc2। और जब इन दोनों को मैं किसी कोएक्सियल केबल या केबल के थ्रू भेजता हूँ, सेम चैनल के थ्रू भेजता हूँ, तो मेरे को कोई ओवरलैपिंग उन सिग्नल का नहीं मिलता है। ओके, सो दिस टेक्निक इज नोन एज मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। एंड द मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल्स मीन्स जब हम केबल देखते हैं तो हमारे घरों में जो सिग्नल्स आते हैं केबल में, उसमें आप देखते होगे बहुत सारे चैनल्स आते हैं। आप कभी कोई चैनल लगा रहे हो, आप चैनल चेंज करते हो, तो कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि उन सिग्नल्स को अपने अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ट्रांसलेट किया होता है। अज्यूम करो ये आपका जो चैनल है, ये आपका आज तक चैनल है, न्यूज चैनल जो होता है। ये अज्यूम करो आपका IBN 7 है। उसी तरह से बहुत सारे चैनल्स होंगे। जब मैं चैनल्स को चेंज करता हूं तो उसमें मेरा जो मेन मोटिव होता है वो मैं उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी को चेंज करता हूं। अब उस कैरियर फ्रिक्वेंसी के आसपास जो भी सिग्नल होता है Fc1 प्लस Fm और Fc1 माइनस Fm, वो होल इंफॉर्मेशन मेरे पास ट्रांसमिट हो जाती है और उसी इंफॉर्मेशन को मैं यूज करता हूं मेरे टीवीज में, जो टीवी में हम चैनल चेंज करते हैं। That is the process of the multiplexing, and this multiplexing is also done by using the modulation. Okay, in the next class we will discuss how we get the amplitude modulation of the signal. Okay, have a nice day. Thank you.